watching. If you enjoyed this video, please like it and don't forget to subscribe my channel. And don't miss to check new recipes every Tuesday. Thumbs up and share this video with family and friends. बनाना चीजें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होगा फुल फैट मिल्क पाउडर। ये हर जगह से मिल जाता है, चाहे आप अब्रॉड रहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान इंडिया में। तो आपको पता है जो दूध के डब्बे होते हैं, आपको वो चाहिए होंगे। मैं नीडो को इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज नाम ले लें। मैं नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स 2 कप्स। आपने लेवल लेने, मेजरमेंट अगर आपकी सही है, आपकी चीज खराब नहीं हो सकती इंशाल्लाह से। सो दैट्स 2 कप्स ऑफ ड्राइड मिल्क फुल फैट पाउडर चाहिए आपको। साथ ही आपको चाहिए होगी शुगर 2 कप्स और आपको चाहिए यहाँ पे मैदा, यानी कि जो फ्लावर होता है जिसे हम पूरी बनाते हैं, ये वो आपको चाहिए 1 टीस्पून लेवल्ड। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून लाइटली लेवल्ड, ज्यादा भर के नहीं, लेवल्ड होगा। घी आपको चाहिए होगा मेल्टेड, इसके लिए 2 टेबलस्पून। एग्स यानी कि अंडे आपको 2 चाहिए होंगे, इसे हम बीट करेंगे। इलायची आप बीच में साबुत यानी कि होल भी डाल सकते हैं, जितना आपको जायका पसंद हो। मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट्स 1 टीस्पून लेवल्ड। बादाम और पिस्ते यानी कि आमंड्स एंड पिस्ताशियोज, आपकी मर्जी आपने कितना डालना है। ये तकरीबन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ईच। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी देसी चीजें होती हैं रसमलाई का, इसमें तो बादाम वगैरह अच्छे लगते हैं। साथ ही आपको दूध चाहिए होगा फ्रेश। आप यहाँ For this we'll need 2 liters of milk, 1 liter to prepare the chenna and 1 liter to prepare the rabdi, 1 cup of sugar, 1 tablespoon of lemon juice or vinegar, chopped almond and pistachios, half a cup of condensed milk, pinch of cardamom powder, pinch of white pepper, and also 2 cup of वाटर। ये मैदा डाल रही हूँ बीच में। देखिए, अगर आपकी मेजरमेंट सही होगी तो ये कभी भी सख्त नहीं होंगे और कभी भी नहीं टूटते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेजरमेंट सही करें चीजों को और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। और बॉल्स बनाते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको बहुत नीट और राउंड बनाएं और उनमें कोई क्रैक्स ना हो। पहले हम ये सब चीजें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैदा वगैरह सब कुछ है। दूध आप ये साइड पे चढ़ा लीजिएगा, ताकि उसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकने देना होता है अच्छी तरह। चलिए, ये इसमें मैंने अब जो है मिक्स कर ली चीजें। आप इसमें अब घी डालेंगे और साथ ही जो हमारे एग्स हैं इन्हें हमने विस्क करना है इन अ बोल। इसे एक बोल में पहले अंडों को तोड़ लें और इसे पहले हम बीट कर लेते हैं और इसको भी फिर बीच में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी इसमें ऐड कर लिया हुआ है और प्लीज हाथ जरूर वॉश कर लीजिएगा। आई ऑलरेडी डन माइन। पहले मैंने घी को बीच में डालकर, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, उसको मैं बीच में मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही बीच में अपने एग्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। और एग्स ऐड करने के बाद हम इसका जो है बॉल्स बनाने के लिए इसका डो बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपसे डो नहीं बन रहा तो आप बेशक बीच में 1 या 2 कतरे दूध के भी डाल सकते हैं, लिक्विड मिल्क के, ताकि आपका डो बन जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चीजें मैंने आपको मेजरमेंट बताई है उसके हिसाब से आप देख लें कितना परफेक्टली डो बन रहा है। मुझे किसी भी दूध की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि मेजरमेंट्स का प्लीज ख्याल रखें। और ये कभी भी आपके जो है रसमलाई हो, रसगुल्ले हो, कोई भी ऐसी मिठाई हो, गुलाब जामुन, ये कभी भी खराब नहीं होती है। तो आप ये देखें कि कितना परफेक्टली इसका डो बन गया। इसको 1-2 मिनट आपने सिर्फ देने, हल्का सा आपने इसको यूं गूंदना है और आपको किस तरह चलेगा कि आपका परफेक्ट डो बना है। आप जरा देख लें कि इसके ऊपर आप शाइन देख रहे हैं। आई होप यू कैन सी द शाइन। ये एक पहचान होती है कि आपके जो रसमलाई के जो बॉल्स हैं ये बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये कर लेने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने स्टैंड होने देना है। और फिर हम इसके बॉल्स बनाकर सारे इकट्ठे रखेंगे और फिर बाद में दूध में सब इकट्ठे ही ऐड करेंगे। ये मत कीजिएगा कि आप एक एक करके बीच में बनाकर डालें, दैट्स रॉन्ग। इसे 2 मिनट स्टैंड होने दें, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसके बॉल्स इकट्ठे बनाकर बीच में डालेंगे। मैं आपको बाद में दिखा। पर आप देख लें कि मैंने जो है कितने, आपकी मर्जी, मैंने हर किस्म का साइज आपको बना के दिखा दिया, लेकिन जरा थोड़ा छोटा साइज बनाएंगे तो क्योंकि ये दूध में जाके फूलते भी हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि डो आप हाथ में लेंगे, जितना आपने बॉल बनाना है इसको हल्का सा पहले प्रेस करें। देखिए इसका जो ओरिजिनल ऑयल है वो खुद ही निकल रहा है। और फिर आपने प्रेस करने के बाद इसको यूं हाथों में आपने गोल जो है हमने इसके बॉल्स बना लेने। To prepare the chenna, boil the milk and add 1 teaspoon of lemon juice or
vinegar and stir it. By adding the lime juice or vinegar, the milk will start to separate. The milk has been separated, as you can see. Now we'll pour our chenna mixture on a cloth. Wash the chenna with water. Tide it using a cloth. Drain excess of water and keep it to rest for at least 10 to 15 minutes. Henna is ready. Now we'll clean it like this. Do this procedure at least 10 times. Our paneer or chenna is done. Now we'll make small dumplings out of it. Boil the milk for the rabdi and then add half a cup of condensed milk to it. Mix it. Add cardamom powder and white pepper. Mix it. And let it boil. To the rabdi add almond and pistachios and let it cook for 10 to 15 minutes on low flame. Our rabdi is done. Let it cool for 1 hour. 1 cup of sugar. To this add 2 cups of water. And stir it till the sugar dissolves. Our rasmalai dumpling is ready. Now we'll place it in the sugar syrup. Cover it with lid and let it cook for 5 to 10 minutes on slow flame. After 5 minutes, switch off the flame. As you can see, our rasmalai is ready and it's very spongy and soft.
Now let it cool in the sugar syrup. Our rasmalai in the sugar syrup has been cooled. Now we'll remove it out of the sugar syrup and we'll squeeze it and remove excess of sugar syrup from it. Garnish it with almond and pistachios. Our rasmalai is ready. If you like my video,